Hello guys, hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to this video. Today is 21 December and today your paper is of physics. In this video, I will give you instruction how you have to attempt your physics paper because mostly students makes too much mistakes in their revision test of physics. So listen this video carefully to avoid that mistakes. For example, mostly students make mistakes in question number 7, that is how much types of motion. Define all types of motion with examples. You can see this is a long question and it contains 9 marks. Some students do not give examples, so they do not get cannot get 9 marks. They get only 6 to 7 marks. And when you have to explain types of motion, you have also explained the types of translatory motion because translatory motion is a type of motion. So mostly students क्या करते हैं कि translatory motion की डिफाइन नहीं करते, की टाइप्स को डिफाइन नहीं करते translatory motion की, तो उनके भी जो मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट होते हैं and they get only 5 to 6 marks. So there are too much conceptual short questions and long questions in this paper that I explain in this video. So listen this video carefully. Your physics paper contains 60 marks and there are 3 parts in this paper. First part is of MCQs, second part is of short questions, third part is of long questions, and your objective is of 12 marks and subject is contains 48 marks. Now I explain your paper. First of all, you must write your name on your objective. Total marks 12 plus 48 is equal to 60. Pass marks are 30 and time allowed for MCQs are 50 minutes. In objective, cutting, doubling, overwriting and use of ink remover is not allowed. If you use ink remover or overwriting or doubling, your marks will be deducted. Now you have to circle the correct answer. You have not ticked the correct answer. You have to circle the correct answer. Okay. MCQs number 1 is the study of the internal structure of the earth is called. You have 4 options: A. Atomic physics, optics, plasma physics, geophysics. Number 2, intensity of light is a base quantity, drive quantity, base unit or drive unit. Part number 3, multiple of prefix mega is equal to, you have to write A. You have 4 options. A is 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 6 and then 10 raised to power 12. Number 4, least count of a vernier caliper is 0.1 millimeter, 1 millimeter, 0.01 millimeter, 0.001 millimeter. Number of significant figures in 0.00580 are, you have to circle the correct option, that is A is 5, B is 6, C 3, D 4. Part number 6, which one of the following unit is not a drive unit? यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये बताना है कि कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है, ये नहीं बता देना कि कौन सा ड्राइव यूनिट है. ए ऑप्शन पास्कल, न्यूटन, किलोग्राम, वाट. पार्ट नंबर 7, to and fro motion of a body about its mean position is known as vibratory motion, rotatory motion, linear motion or random motion. Least count of screw gauge is 0.1 millimeter, 1 millimeter, 0.01 millimeter, 0.001 millimeter. इस बात का ख्याल रखना है कि ये पहले लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर था और अब ये स्क्रू गेज है. A vector quantity is described completely: magnitude, direction, both A and B,
None of these. S is equal to V over T, Pt, T over V, dt. The motion of the wheel is vibratory motion, rotatory motion, linear motion, or random motion. Cheetah can run at a speed of 17 km per hour, 80 km per hour, 90 km per hour, or none. Now we come to its subjective part. Subjective time allowed for descriptive or subjective part is 1 hour 45 minutes. Short question have 3 parts. This is of question number 2, 3 and 4. In question number 2, you have to attempt any 5 parts out of 8 parts. एंड एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है आपकी कोई सी भी शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो उसके मार्क्स आपको लाजमी तौर पर दिए जाते हैं। पार्ट नंबर 1 डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स। पार्ट नंबर 2 राइट डाउन 7 बेस क्वांटिटीज। पार्ट नंबर 3 write down the base unit of electric current, intensity of light. Part number 4 define scientific notation. Write down the multiples of following prefixes 1 किलोमीटर मेगा। तो ये जो 2 प्रीफिक्सेस आपको दिए गए हैं, एक 1 किलोमीटर एक मेगा, इसकी आपने जस्ट मल्टीपल्स लिखने हैं। आपको इसको डिफाइन करने या किसी और की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। Now you have to define only what is electromagnetism, what the zero error of sacred gauge is positive, when the zero error of sacred gauge is positive and when negative. sacred gauge का जो जीरो एरर है कब पॉजिटिव होता है एंड कब नेगेटिव होता है ये आपने बताना है, इसको प्रॉपर आपने डिफाइन करना है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, जस्ट टाइप्स लिखनी है, ये जस्ट नहीं बता देना कि कितनी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, आपने ये नहीं बता देना कि उसकी कितनी टाइप्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितनी है, साथ उसके नाम भी लिखने हैं। जस्ट आप उसकी तादाद बता देंगे तो यू हैव ओनली गेट 1 मार्क्स। अगर आप उसके नाम भी लिखेंगे तो देन यू गेट फुल मार्क्स दैट आर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव आल्सो अटेम्प्ट 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाजमी कीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो एक्स्ट्रा के जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए होंगे उसके मार्क्स आपको लाजमी मिलेंगे। नाउ पार्ट नंबर 1 डिफाइन हीट। पार्ट नंबर 2 राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। आपने फैक्टर्स बताने हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी, कौन से फैक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में के जो आपने वो फैक्टर्स लिखने हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्यूरेसी है मेजर करने की उस पर डिपेंड करती है। पार्ट नंबर 3 फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने यहाँ पर बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, जस्ट तादाद बतानी है, 5 है, 6 है, 10 है, बस बाकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क 100.8। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पार्ट नंबर 5 एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड, डिफाइन प्लाज्मा, डिफाइन मोशन, डिफाइन काइनेमेटिक्स। There are no examples of kinematics, so लिखने की जरूरत नहीं है। Question number 4. This is also a part of short question. Attempt any 5 question out of 8. Can a body is in rest and motion at a time? Explain with example. So you can give only one example to explain this. Part number 2. Differentiate between uniform speed and uniform velocity. Number 3. Define Brownian motion. You have also give example of Brownian motion. Part number 4. Discuss the motion of Earth. Mostly students make mistakes in this question. So I tell you there are 2 types of motion of Earth that you have to discuss in this question.
Okay, so write down correctly. Part number 5, differentiate between distance and displacement. Part number 6, define lighter gun. Write down one of its use. If you do not write its use, you get only 1 marks. Okay, so you have also write down the use of lighter gun. Part number 7, define speed. Part number 8, define velocity and write down its unit and formula. Now note, attempt any 2 questions from long question. So there are, you can see there are 3 long questions. You have to attempt any 2. If you are attempting question number 5, you must attempt part number A and B. If you are attempting 6 and 7, then it is your choice. But if you are attempting 5, you cannot attempt मतलब आप A क्वेश्चन नंबर 6 या A और क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कर दें, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं और A B आपको दोनों पार्ट्स करने होंगे। Now define following branches of physics: atomic physics, nuclear physics. Every define is of 2 marks. 2 plus 2 is equal to 4. Now part number B, define significant figures. Write down the rules that are helpful in identifying significant figures. So 1 mark of define and 4 marks of rules. So you have to write all the rules that are helpful in identifying significant figures. You have not, you have, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट 4 पॉइंट्स लिख देंगे, आपको टोटली पॉइंट्स ही लिखने हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन वर्नियर कैलिपर। आपको वर्नियर कैलिपर की डिफाइन लिखनी है जो कि समरी में प्रॉपरली दी गई है, टॉपिक में प्रॉपरली नहीं दी गई। सो टॉपिक वाली आपने डिफाइन नहीं लिखनी, समरी वाली लिखनी है। इफ़ यू राइट टॉपिक इज डिफाइन, then your marks will be deducted. Discuss its parts. Okay, define least count of vernier caliper and discuss zero error of vernier caliper in detail. तो zero error को आपने डिटेल से डिस्कस करना है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं लिखेंगे, तो यू कैन नॉट गेट 9 marks. Okay, your marks will be deducted. Question number 7, how much types of motion? ये तो आपको पहले ही मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। मोशन की टाइप्स के बारे में बताना है, क्योंकि ट्रांसलेटिव मोशन की टाइप है, तो जो ट्रांसलेटिव मोशन की जो टाइप्स हैं वो भी हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, उनकी एग्जांपल्स भी लिखेंगे। अदरवाइज योर मार्क्स विल डिटेक्ट, यू कैन नॉट गेट कंप्लीट मार्क्स 9, you get 5 to 7 marks. Okay, I hope this is clear, and best of luck for this paper. Allah Hafiz.